Evening, guys. How are you all? Am I audible to everyone, right? Let me know in the chat box. Hi, Janvi Changlang, Chitradurga, Rutuja, Sakshi. Guys, let me know, am I audible, right? For everyone? It is live only here. We'll start our session within 2 minutes, guys. Within 2 to 3 minutes. Let them to welcome everyone here. Okay, hi, hello everyone. Hi, this is Sham. How are you all? Am I audible, right, for everyone? Do participate in this poll and let me know. Actually, I launched on poll. Okay, please do participate there and let me know, am I audible to everyone, right, properly? Yes, that's great. Good. Okay, it's clear that I'm audible to everyone and my screen is also visible perfectly. And we'll start our today's session, guys. Welcome to all of you.
today's session we are going to discuss about two topics: specific heat capacity and heat capacity. Specific heat capacity actually yesterday itself we need to start, no worries, we'll start. And latent heat के बारे में थोड़ा बताता हूँ आज. Okay, these are the three topics which we are going to cover today. And before that, let us take a quick recall what we discussed in our previous classes. Okay, previous class में linear expansion के बारे में बोल दिया था मैंने, right? In linear expansion we define one coefficient of linear expansion constant, that is alpha. Correct ना? Alpha value आता है इधर. Alpha value will be equals to change in length divided by length into change in temperature. Or else we can define this one as like also change in length value will be equal to L alpha dt. Correct ना? Right? And इसका SI unit आता है degree centigrade inverse. Or else you may write Kelvin inverse also, no problem. Cool. And then superficial expansion, that is a beta value, right? Beta will be equal to dA divided by A into delta T. Or else we can write this one as an dA is equal to cross multiplication, this one to here. Okay, beta A change in temperature. इसको भी SI unit आता है degree centigrade inverse. Similarly, volume coefficient we defined as an gamma. Gamma value will come out to be dV divided by virginal volume into change in temperature. This value will be come out to be dV value gamma V dt. इसका भी SI unit same ही होता है. These are all the things which we covered, and also we covered the relation between alpha, beta and gamma. Correct ना? Alpha, beta, gamma का relation क्या होता है? Alpha is equal to, sorry, alpha is to beta is to gamma. If you're going to write means alpha value will be equal in beta, it is 2 times the alpha, because in superficial expansion will be takes place in two ways. One is along the x-axis, along the y-axis, means length and breadth. Though two ways it will be, it will be alpha. And coming to the alpha will be 3 times the alpha, means length, height and as well as breadth. 3-dimensional expansion. Clear now? These are the things which we discussed, and later on we started the anomalous expansion of water. Right? In the last minute I explained this one. Today I will explain in a understanding way. Okay? क्या है ना anomalous expansion? It's a special property of water. क्या है? Property of water है. This is a special property of water. What happens? Actually मान लो इधर बीकर में water है, इसका temperature क्या है? 10 degree centigrade है. इसका temperature will be 10 degree centigrade. If I am going to provide the heat, क्या heat provide करने से क्या होता है? ये temperature बढ़ जाता है. Now it will be reaches 12 degree centigrade मान लो, 12 degree centigrade. At this 12 degree centigrade, the volume of water होता है ना, previously मान लो this is the volume. Okay, now the volume will be increases. Volume क्या होता है? Increase होता है, right? And volume increases means density थोड़ा decrease होता है. Obviously we know, we'll talk this one later. Yeah, so many properties are there here, heat and thermodynamics में. We'll discuss that one in a particular topic itself. And further if you're going to increase means temperature को, now it will reach us 20 degrees Celsius, and further volume क्या होता है? Increase होता है. Correct ना? And increasing temperature को increase करने से क्या हो रहा है? Volume increase हो रहा है. It is coming upside. Clear ना? Density decrease होता है. What if reverse process guys? If I'm going to decrease the temperature को क्या कर रहा हूं मैंने? Decrease कर रहा हूं. This is the left side है ना? This is decreasing one now. If I'm going to decrease the temperature, right? देखो इधर अगेन क्या होना चाहिए? वॉल्यूम पहले इतना था ना, और नेक्स्ट वॉल्यूम शुड बी डिक्रीज. Volume should be decreased if you're going to decrease the temperature. And now मान लो 10 degree से up to 4 degree centigrade I decrease the temperature, volume also decreases continuously. Right. Now after reaching 4 degree centigrade,
It's a special property from this point onwards. If I further decrease the temperature, क्या कर रहा हूं मैंने? Further I'm going to decrease the temperature. If I decrease the temperature further after reaching 4 degrees centigrade, instead of decreasing, volume decrease होना था, but now volume will not decrease as. Instead of decreasing, now the volume start to increase. Increase होता है up to 0 degree centigrade. This is one of the special property of water. This is one of the special property of water. We call this one as an anomalous expansion of water. We call this one as an anomalous expansion of water. मान लो, I will explain this one through the graph, then you will get a clear idea about it. मान लो volume था इधर at 10 degree centigrade. At 10 degree centigrade, volume का value इधर था. Y axis में I will take volume. X axis I will take temperature. This is increasing in order temperature in this way, right hand side, from 0 to increasing way. Now what I will do, I will decrease the temperature. Temperature को decrease कर रहा हूँ 9, 8, 7, 6, 5, 4 degree centigrade. Up to this 4 degree centigrade, if I decrease the temperature, means volume should also be decreases. Volume क्या होता है? Decrease होता जाता है like this, right? Up to 4 degree centigrade. This is 4 degree centigrade. After further decreasing in temperature, next I will decrease further behind the 4 degree centigrade. Further decrease कर रहा हूँ temperature को. Now instead of decreasing in volume, now the volume of water will start to increase like this. Volume of water will start to increase, right? This is the property as an anomalous expansion up to 0 degree centigrade. If you all understood this one right now, let me know in the chat box once. Hi Prasanna, Ashwini, Hamender, Rutuja, Namrata, Jenny Changlang, Sakshi, Shubham, Swapnil. Is it understood to everyone, right? Free feel to drop a message in the chat box, yaar. Right? Yes, guys. Finally, you are back. Yes, Sakshi, good. Okay, Rutuja, right. Yeah, yes, Prasanna, good. Namrata, right? Okay, we'll come to the next point. Today's another one topic है. इधर next topic था pendulum based problem. इस simple से explain करता हूँ pendulum based problem क्या है. Actually हमको पता है pendulum क्या होता है. Pendulum is nothing but एक suspend एक rigid support होता है. This is a rigid support. This rigid support is actually hanging by a small mass. बॉब का मास होता है m, मेटालिक बॉब होता है, उसको हैंग करते हैं एक थ्रेड के साथ. We call this one as an pendulum, right? You know this one. Now what I'm going to take, this pendulum का thread है ना, instead of thread I'm going to take this one as an copper. ये क्या है? कॉपर है. कॉपर था, इसका इनिशियल लेंथ था L. इनिशियल लेंथ ऑफ द कॉपर क्या है? L. If it is start to oscillate, means it will be come here, means we call this one as an extreme position. It will come here, and again here it will create angle theta, and again it will be move in this opposite direction. Again it will create the same angle theta. It will start to oscillate. If the oscillation, suno, the answer is no. If the oscillation will complete one rotation like this, from A to B and then B to A, we call this one as an time period. One time period we will call, or else we can call this one as an one oscillation also. What we will call one oscillation. Okay, now this is already you know, guys. Now what I will do, I'm going to expose this one to heat. Heat को expose कर रहा हूं मैं. When I am going to expose this one to heat, the length of this pendulum है ना, it will become now L plus DL. Means length क्या हो गया? थोड़ा increase हो गया. Length थोड़ा increase हो गया. Now again, if it is oscillating, means इसका time period देखो कैसा होता है.
सेम एंगल, पिछले बार कितना था ना एंगल, सेम ही एंगल है मान लो, थीटा विल बी सेम दोनों साइड में. ओके, अगेन इट विल स्टार्ट टू मूव ए टू बी एंड बी टू ए. ओके, नाउ let me know guys, first figure, this is the second figure. Among these two figure, which pendulum it takes larger time to cover one oscillation? My question is very simple. Which pendulum among these two, 1 and 2, it will take larger time to complete one oscillation? Right, right. Next, I need answer from your end, guys. Yes, good Ashwini, good Balari, guys. I'm expecting answer from everyone. Try to participate. How was the Josh? मेरा पास तो लो है. Okay, it's nice. Second pendulum will take the large time because देखो इधर फर्स्ट पेंडुलम का पाथ कितना था, इतना था, करेक्ट ना. सेकेंड पेंडुलम का पाथ क्या हो गया, इतना बढ़ गया, राइट. इफ यू आर गोइंग टू कंसीडर दिस ऑरिजिन, देखो इधर एक आर्क लेंथ है ना, वी कॉल दिस वन एज एन आर्क लेंथ. यस्टरडे वी टॉक्ड दिस इज a b, a dash b dash will take, this is a a b for the first one. A dash b dash है ना, this is one a dash b dash if you want to find out, correct. It is a large distance, it is taking lot of time to cover one oscillation, right. Yes, it is right. Means इधर टाइम ज्यादा ले रहा है. टाइम पीरियड पता है आपको, टाइम पीरियड का इक्वेशन होता है t is equal to 2 pi under root of L by G, करेक्ट ना. इधर टाइम पीरियड क्या होता है इसको पता करना है हमको. दिस इज व्हाट आवर क्वेश्चन नाउ, राइट. टाइम पीरियड ज्यादा हो गया, कितना ज्यादा हो गया, टाइम पीरियड ज्यादा होने से मान लो दिस ऑसिलेशन विल बी ओके. टाइम पीरियड है 2 सेकेंड, 2 second means in 2 second it will make one oscillation. Now it will take 3 second, correct na. Time thoda means 1 minute or 2 minutes I say you are going to take, means the time will be going to shortage. That time we need to find out here, right. How to find out time, both time. And meanwhile if you are having any doubt, please drop your doubt in the chat box. Clear? Don't keep your doubts in your mind, it is not good. Okay, okay. Time period कितना था पहले, t is equal to 2 pi under root of L by G था, right. Good. Next time period क्या था, t dash. I don't know that one. T dash I will write. T dash का वैल्यू हो गया सेम 2 pi under root of L का प्लेस में क्या लिखना है हमको इधर, yes, L plus dl upon G, dl upon G. Now actually I want to know the value of t dash. T dash को पता करना है. That's why what I will do, ये दोनों इक्वेशन को मैंने डिवाइड करता हूं. क्या करता हूं, मैंने डिवाइड कर लूंगा. डिवाइड करने से 2 डिवाइडेड बाय 1 करना. दिस इज 2, दिस इज 1, दिस इज 1. ये दोनों को डिवाइड करता हूं. देखो इधर t dash by t is equal to, t dash means 2 pi under root of L plus dl upon G divided by, okay इधर ही करते हैं, divided by 2 pi under root of L upon G. 2 pi से 2 pi मर गया, ये G से रूट G मर गया, ठीक है ना. नेक्स्ट देखो h by t is equal to under root of L plus dl divided by under root of L है, इसको हम लिख सकते हैं टोटली अंडर रूट ऑफ L प्लस dl को हम लिख सकते हैं, dl का वैल्यू पता है ना, लीनियर एक्सपेंशन का वैल्यू, उसको रखता हूं मैंने इधर. dl का वैल्यू क्या आता है, अल्फा L dt. ड्यू टू चेंज इन टेम्परेचर लेंथ चेंज हो गया विथ रेस्पेक्ट टू द कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन, राइट व्हाट आई एम सेइंग, एंड डिवाइडेड बाय L, right. Now I will divide this L to both the sides, then it will become t dash by t is equal to
under root of totally L by L plus alpha L delta T divided by L. L से L मर गया, again L से L मर गया. Remaining thing will be here under root of 1 plus alpha dt. 1 plus alpha dt is a t dash value by t. Now ये अंडर रूट है ना, इसको हम लिख सकते हैं पावर ऑफ 1/2. क्या लिख सकते हैं हम इसको? पावर ऑफ 1/2. देन टी डैश वैल्यू विल बी इक्वल टू, टी को इधर मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करने से इधर आता है टी. इसको हम लिख सकते हैं टी प्लस 1 प्लस अल्फा डी टी होल टू द पावर ऑफ 1/2. होल टू द पावर 1/2. Hope you all understood up to this point. Up to this point there is no doubt, I hope. Let me know in the chat box. Right? Meanwhile, if you have any doubt means let me know. Good. Good. Yes. देखो इधर नेक्स्ट क्या कर रहा हूं मैंने, यही इक्वेशन को थोड़ा सा अल्टर करता हूं इधर. Means it is a good set, it's a good equation, there is no problem, but we can't able to always remember this one. That's fine. Right? Yes, Rutuja, right. Okay, here t dash is equal to t into, इधर देखो 1 plus alpha delta t to the power of 1/2 है. Actually in gravitation guys, in gravitation few days back only I told you all, we derived one equation, binomial expansion मैंने बोल दिया था. कैसे लिखता है? 1 plus x to the power of n था. Okay, मान लो x value is much greater than n. x value है ना, this value is much greater less than n होता, तो we can write this one as an 1 plus nx. We can write this one. Similar way देखो इधर in this equation में, corner का equation में alpha value is very less than the 1/2. alpha value क्या होता है? 10 to the power of -5 होता है. That's why we can write this one by using the binomial expansion here. Right? Binomial expansion use करते हैं ना हम इधर. Don't take too much of tension. Simply we can say this is by using binomial expansion we are dealing this one. Okay, इधर क्या लिख सकते हैं मैंने? 1 plus ऊपर है ना पावर, उसको इधर लेता हूं 1/2 alpha dt. That's it. By using binomial expansion. Clear? And then ये t को इसके अंदर मल्टीप्लाई करता हूं. मल्टीप्लाई करने से t dash is equal to t plus alpha 1 alpha dt by 2. This is the final equation. सुन इधर, I will call this equation number 3. 2 हो गया था, 3 हाँ. Sorry. Okay, देखो इधर t dash कितना होता है? t इनिशियल टाइम पीरियड था, इनिशियल टाइम पीरियड t था, उसके साथ क्या ऐड हो रहा है? Change in temperature and linear expansion coefficient divided by 2. Something what? It is extending here. t के साथ क्या हो रहा है? ज्यादा हो रहा है. Right? Means time period ज्यादा हो रहा है. That is the equation here. Clear ना? Right? देखो इधर t dash कितना ज्यादा हो गया? पहले t को टाइम पीरियड को कुछ ऐड हो रहा है एक्स्ट्रा. Means that time period is increases. Here we can say like this, time period is increase. Clear now? Is it clear? And then they might be asked like this, what will be the, yes, thank you Prasad, what will be the change in temperature? और टेम्परेचर डिफरेंस क्या है पूछता है. उस समय टेक t to left hand side, then it will become t dash minus t is equal to alpha by 2 into dt. alpha by 2 into dt होता है. yes Namrata, good. Okay, then this t dash minus t इसको हम लिख सकते हैं dt, or else you may write this one as an delta t. change in temperature, so change in time, this is guys change in time. Change in time, okay, is equal to alpha by 2 into dt.
इधर dt है ना, दिस इज वी कॉल्ड चेंज इन टेम्परेचर। ओके, लिख दो इसको, बट डोंट मिक्स ईच अदर। ओके, हो गया ना? इंपॉर्टेंट इक्वेशन है ना, उसको लिख दो, इट इज एनफ। नाउ दिस derivation and वगैरह वगैरह all the things, it is not required. Okay, just mention the important solve on these formulas. Okay, try to go through the previous year question papers and mock test papers, right? नोट डाउन कर लिया ना? ओके, विल मूव टू द नेक्स्ट थिंग। नेक्स्ट क्या है? सेम 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 तरीका है। अरे यार को annotation, ओके, इनिशियल लेंथ था सेम पेंडुलम, इनिशियल लेंथ था l। ओके, नाउ व्हाट आई विल डू, टेम्परेचर चेंज हो रहा है बट टेम्परेचर वैल्यू इज डिक्रीजिंग। इफ डिक्रीजिंग टेम्परेचर होता है मींस ये लेंथ क्या होता है, l माइनस dl, मींस लेंथ कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। इधर कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है मींस टाइम पीरियड ज्यादा होता है या कम होता है। ओके, लेट मी नो फॉर दिस फिगर 1, दिस इज 2। सेकेंड फिगर के लिए टाइम पीरियड whether it is decreasing or increasing, let me know in a chat box। लास्ट टाइम तो वो लेंथ बड़ा हो गया था, इसलिए टाइम पीरियड, द टाइम टेकन बाय द बॉब इज वेरी लार्ज टाइम। नाउ टाइम पीरियड क्या हो रहा है, टाइम पीरियड इज डिक्रीजिंग, क्योंकि लेंथ डिक्रीज हो रहा है ना, इसलिए। यस यस, गुड गुड गुड। ओके, इसके लिए इक्वेशन बनो मींस सेम तरीका है। आंसर विल बी कम आउट टू बी t डैश इज इक्वल टू t माइनस अल्फा बाय 2 इंटू dt। ओके, सेम इक्वेशन ही है, देयर इज नो चेंज। गाइस एक्चुअली दिस इज द क्लॉक प्रॉब्लम आता है, उधर पूछ सकता है एक क्वेश्चन को, इसलिए मैंने बोल दिया। राइट, व्हाट आई एम सेइंग, क्या है ना, मान लो फर्स्ट पहला था ना, पहला में इट विल टेक 2 सेकेंड टू कंप्लीट वन टाइम पीरियड, मींस 1 मिनट में, इन 1 मिनट इट विल ऑसिलेट 30 टाइम्स, 30 टाइम्स ऑसिलेशन होता था। नाउ द लेंथ इज चेंज्ड, नाउ करेक्ट ना, द लेंथ इज चेंज्ड, नाउ द टाइम पीरियड विल बिकम, पहले 2 सेकेंड था ना, अब इट विल बिकम 1.5 सेकेंड। इन 1.5 सेकेंड में एक चक्कर लगाता है। एट द टाइम इन 1 मिनट के लिए कितना ऑसिलेशन करता है, 30 ऑसिलेशन करता है क्या, नहीं, अराउंड 45 ऑसिलेशन इट विल डू, ज्यादा ऑसिलेशन करता है। मींस टाइम पीरियड क्या हो रहा है, इधर टाइम पीरियड डिक्रीज हो रहा है, टाइम लॉस हो रहा है इधर। सो लॉस हो रहा है, गेन हो रहा है, बहुत गेन हो रहा है, करेक्ट ना। वी रिक्वायर दैट टाइम ओनली। देखो इधर टोटल टाइम पीरियड t है ना, ये टाइम पीरियड में चेंज इन टाइम पीरियड कितना होता है, हम लिख सकते हैं इसको डेल्टा टी में लिखता हूं मैंने, डी डेल्टा टी इज द चेंज इन टाइम पीरियड। मान लो मींस वन टाइम पीरियड में इतना टाइम ज्यादा हो गया और इतना टाइम कम हो गया डेल्टा टी के टाइम में। नाउ 1 यूनिट टाइम में, मुझे पता नहीं 1 यूनिट टाइम में कितना टाइम लॉस होता है और गेन होता है, मींस इट इज नथिंग बट डेल्टा टी अपॉन टी इंटू 1 यूनिट टाइम। मुझे पता नहीं यूनिट टाइम कितना है, 1 आवर, 2 आवर, और इट मे बी 1 डे और 2 डे आल्सो, राइट। वी नीड टू कैलकुलेट दैट वन, कितना एक्सेस ऑफ टाइम हो गया, कितना कम टाइम हो गया, करेक्ट ना। फॉर दैट रीजन इधर 1 यूनिट टाइम के बाद में मैं लेता हूं टी टाइम। टी टाइम मींस टी को मान लो 1 आवर है। ओके, 1 मिनट में कितना ऑसिलेशन आ रहा है, टाइम पीरियड डिक्रीज हो रहा है। ओके, 1 आवर में कितना होता है, कैलकुलेट करना है। दैट्स व्हाई t इज इक्वल टू डेल्टा टी डिवाइडेड बाय t इंटू 1 आवर में हियर t सेकेंड, दैट इज लिख दो इधर t टाइम, दैट्स इट। Okay, this is the excess of case, no problem for the NEET students, those who are watching. Okay, कोई problem नहीं, just you want to know that
व्हाट इज दैट? चेंज इन टाइम पीरियड. चेंज इन टाइम पीरियड को पता होता तो इट इज एनफ. विल मूव टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, राइट? And meanwhile, if you are getting any doubt, means drop the doubt in the chat box. Next concept आता है इधर, specific heat capacity. Specific heat capacity. सुनो guys, this is specific heat capacity. How we will going to define? Amount of heat required to raise the temperature of 1 gram substance by 1 degree Celsius. You know, amount of heat required to rise the temperature of 1 gram of a substance by 1 degree centigrade. मान लो इधर एक वेजल है, ये के अंदर वेजल के अंदर पानी है. ओके, एक्चुअली इसका वेट कितना है? मास वेट 1 ग्राम है. इधर भी वही है 1 ग्राम. नाउ आई स्टार्ट टू गिव द हीट टू दिस सब्सटेंस में 1 ग्राम है वाटर. ओके, इनिशियली इसका टेम्परेचर था 27 डिग्री सेल्सियस T1. आफ्टर सप्लाइंग अमाउंट ऑफ हीट इसका टेम्परेचर बढ़ गया, 28 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया. कितना? 28 डिग्री सेंटीग्रेड बन गया. क्लियर है ना? मास तो सेम ही है, देयर इज नो चेंज इन मास, राइट? हाउ मच अमाउंट ऑफ हीट यू प्रोवाइडेड? हाउ मच अमाउंट ऑफ हीट यू प्रोवाइडेड to increase the temperature by 27 degrees Celsius to 28 degrees Celsius, right? This is a special quantity or physical quantity. We are representing this one as an specific heat capacity. Hope you all understood this one, right? क्या होता है specific heat capacity? It is nothing but amount of heat required. How much amount of heat required to rise the temperature of 1 degree centigrade? 27 से 28 1 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया ना, राइट? हाउ मच अमाउंट ऑफ हीट इज रिक्वायर्ड टू राइज द टेम्परेचर ऑफ 1 डिग्री सेंटीग्रेड ऑफ 1 ग्राम सब्सटेंस. 1 ग्राम सब्सटेंस. क्लियर? इज इट क्लियर? डेफिनेशन है. मान लो इधर कॉपर है, ये मान लो दिस इज कॉपर. ओके, कॉपर का मास है मान लो 1 ग्राम. 1 ग्राम, इसका मास क्या है? 1 ग्राम है. ओके, इनिशियल टेम्परेचर था कॉपर का 27 डिग्री सेल्सियस. I'm supplying the Q amount of heat to this copper. Now the copper temperature, it is increasing by 27 to 28 degree centigrade. Means 1 degree Celsius क्या हो गया? Increase हो गया. To increase this 1 degree Celsius for 1 gram substance, कितना अमाउंट ऑफ हीट आप दे रहा है ना, उसको हम कहते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, राइट? इफ यू हैव डाउट मींस प्लीज ड्रॉप योर डाउट्स इन अ चैट बॉक्स. यस, गुड गुड. ओके, इसको एक्चुअली दिस इज अ वे हाउ वी आर गोइंग टू डिफाइन. वी नीड टू डिफाइन दिस वन मैथमेटिकली, right? That's why here amount of heat what you are providing, it is directly proportional to the mass. mass कितना होता है उतना amount of heat provide करना पड़ता है आपको 1 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज करने के लिए, right? what I am saying, mass ज्यादा होता है तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज करने के लिए बहुत ज्यादा हीट देना पड़ता है. That's why heat is directly proportional to the mass of the substance. Clear? Next point है heat is directly proportional to temperature difference. We can tell this one as an dt. Okay, I will call this one as 2. Mass of a substance. M stands for mass. Okay, dt stands for change in temperature. Change in temperature. ये दोनों इक्वेशन मिला के मैं क्या लिखता हूं? Q is proportional to m dt, not C. प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया मेरा इधर. mdt. I will call this equation number 3. But amount of heat what you provided here, it is not exactly equal to right side quantity. It is actually proportional. Here to replace this proportional quantity, I will introduce one constant quantity. क्या कर रहा हूं मैंने? एक constant quantity को introduce कर रहा हूं मैंने. That is I will call Q is equal to C.
C stands for specific heat capacity. Guys, C stands for specific heat capacity into m dt. Okay, लिख दो इसको. This is very important. Heat का equation होता है when under the change in temperature. Change in temperature, we will write heat equation Cm dt. C stands for specific heat capacity, M stands for the mass of the substance, dt stands for the change in temperature. It stands for change in temperature. If you want to find out this value, C value चाहिए means ये दोनों टर्म को लेफ्ट हैंड के ऊपर लेके जाना. Then C value will becomes out to be Q divided by m dt. Q divided by m dt means amount of heat required to rise the temperature by 1 degree centigrade of 1 gram substance. Right? इसका SI unit लिखना है. Okay, now I told everything. No, I want to know what will be the SI unit for this quantity. बोल दो quickly. Tell me in a chat box. What is the SI unit for this quantity? Who will tell first? I will check the chat box. SI unit क्या होता है? ऋतुजा, Nikita, Swapnil, Trishna, Ballari. What will be the SI unit for this quantity? Namrata, Nihal, Prasad. I need answer from your end. Hey. Okay. Yeah, wonderful effect. Wonderful effect. Okay. देखो इधर Q stands for heat. इसका SI unit होता है joule divided by mass को we will take this one as an kg. Correct ना? Kg. And then change in temperature, either you write in a Kelvin or centigrade. कोई problem नहीं. Degree centigrade I will write now. Right? This is the SI unit. Yes कैसे आता है यार? This is not time. This is change in temperature. मैंने इधर लिखा था इसलिए. Okay? कोई problem नहीं. Hope you all are tried well. Right? देखो और एक बात बोलता हूं मैंने इधर ग्राम में लिया था ना मैंने वाटर को. इसका वाटर का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होता है C value will be 4.2 joule per gram per degree centigrade. Means it is depending actually. Okay, if you're if they're giving in degree Celsius means almost all we are taking in degree Celsius only. Degree Celsius में लिखता हूँ हम इधर thermodynamics में. If in case sometimes it is required to convert means then only we will write this one in a Kelvin. Which question, bro? Prasad, which question? Drop your question, that one. I will answer. Okay, okay. That's great. That's great, buddies. Okay, इधर देखो. Specific heat capacity of water होता है 4.2 joule per gram per centigrade. इसका मतलब होता है 1 gram of substance of water है ना 1 gram of water है ना इसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज करने के लिए हमको हीट देना पड़ता है अराउंड 4.2 joules. 4.2 joules देना पड़ता है. सिमिलरली कॉपर है ना इधर कॉपर का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर इफ यू आर गोइंग टू फाइंड आउट मींस जस्ट अ मिनट. कॉपर का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होता है कॉपर ओके अराउंड 0.4 जूल पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड सॉरी ग्राम सेंटीग्रेड. ओके देखो इधर हाँ अब ठीक हो गया. वाटर का होता है 4.2 कॉपर का होता है 0.4 मींस with 0.4 joule only we can increase the temperature of a copper by 1 degree centigrade.
of a 1 gram. Same 1 gram of water, it requires 4.2 joule of heat to rise the temperature 1 degree centigrade. मालूम होगा हो रहा है ना? Means yes, let me know which substance will consume more amount of energy here to increase temperature, water or copper? Let me know. Water will consume more amount of heat energy to rise the temperature by 1 degree centigrade, or copper will consume more energy to rise the temperature by 1 degree centigrade of 1 gram of copper. Yes, water का specific heat capacity ज़्यादा होता है. That's why it will take more amount of water. See, but copper क्या है ना? If you give the amount of heat means it will suddenly heat it up, and meanwhile it cools down also suddenly. Copper, okay, because its specific heat capacity बहुत कम है. But water, it takes lot of time to heat it up and lot of time to cools down also. Okay, this is all about specific heat capacity. Okay, इधर एक problem भी है. Okay, problem करता है. Okay, problem क्या है? दो problem करूंगा इसके ऊपर. Find the amount of heat required to heat water of 2 gram from 10 degree centigrade to 40 degree centigrade, and specific heat of water. This is not minus, guys. Specific heat of water they given 4.2 joule per gram per centigrade. Okay, who will give the answer for this one? Actually मैंने बोलता हूँ क्या क्या दिया है. मैंने लिस्ट आउट करता हूँ. इधर मास दिया है 2 ग्राम. ओके, इनिशियल टेम्परेचर था T1 is equal to 10 degree centigrade. We already increase the temperature up to 40 degree centigrade. 40 degree centigrade तक increase किया. Means ये दोनों change in temperature हो गया है. Now ये टेम्परेचर इधर से इधर तक इंक्रीज करने के लिए कितना अमाउंट ऑफ हीट देना पड़ता है हमको? हाउ मच अमाउंट ऑफ हीट वी नीड टू गिव टू राइज द टेम्परेचर बाय 10 डिग्री सेंटीग्रेड टू 40 डिग्री सेंटीग्रेड? फॉर्मूला क्या है? वही है, सेम फॉर्मूला. Q इज इक्वल टू CmdT. Here dt is not change in time. dt stands for, guys, change in temperature. लिख दो इधर, change in temperature. And while writing change in temperature, take only difference लेना है. आंसर बोलो मुझे, क्या आ रहा है? सब्स्टिट्यूट करो. C वैल्यू बोल दिया है. एक्सेलेंट. चंदलांग, गुड एफर्ट. C का वैल्यू था 4.2, राइट, जूल पर ग्राम सेंटीग्रेड. यस स्वप्निल, गुड एफर्ट ब्रो, गुड एफर्ट. M का वैल्यू कितना है? 2 ग्राम दिया था. इनटू चेंज इन टेम्परेचर कितना है? चेंज इन टेम्परेचर 10 to 40 मीन्स 40 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 10 डिग्री सेंटीग्रेड का डिफरेंस लेना है. डिग्री सेंटीग्रेड, ग्राम से ग्राम मर गया, सेंटीग्रेड से सेंटीग्रेड मर गया. इट विल कम आउट टू बी 4.2 जूल इनटू 2 इनटू ये दोनों का डिफरेंस होता है 30 डिग्री सेंटीग्रेड. ओके, एंड मल्टीप्लाई दिस ऑल द थिंग्स, यू विल गेट 252 joules. Excellent effort, guys. Excellent effort. Good. Is it understood to everyone, right? Let me know in the chat box. Those who are not understood means please drop your doubt in a chat box. Clear है ना? Then it's fine. Yes, good. Utsa good. Ashwini good. Okay, if it is understood means try to solve this one also. Understand the question first. A heater gives heat at a rate of 100 watt. 100 watt heat दे रहा है. It is used to heat 50 gram of water from 20 degree centigrade to 30 degree centigrade.
एक हीटर है हमारा पास, वो हीटर का पावर क्या है, 100 वाट है। पावर ऑफ अ हीटर इज 100 वाट। ओके, इधर मास दे चुका है 50 ग्राम ऑफ वाटर। वी नीड टू राइज द टेम्परेचर। टेम्परेचर राइज हो गया है, T1 था 20 डिग्री सेंटीग्रेड, T2 बन गया 30 डिग्री सेंटीग्रेड। ये चेंज इन टेम्परेचर होने के लिए ये हीटर 100 वाट हीटर है ना, कितना अमाउंट ऑफ हीट रिलीज कर रहा है हमको। ओके 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 ओके, जस्ट अ मिनट, सॉरी, they are not asking the heat, find the time taken. Okay, to rise this temperature, how much time it has taken, we need to find out. Why, excellent question. Okay, we need to find out the time, कितना टाइम ले लिया है। How pretty question, no? I will tell you how to solve this one. Actually Q के लिए इक्वेशन मिला था हमको, Q is equal to mc/dt, करेक्ट है ना। Q stands for energy guys, हमको पता है वर्क पावर एनर्जी में एक्चुअली you guys have studied like this. Energy is that it is an form of energy, correct ना। energy will write like this, work done, correct ना। energy को work done will say, right। वर्क डन को वर्क डन बाय टाइम, देखो इधर वर्क डन बाय टाइम को हम कहते हैं पावर। वर्क डन बाय टाइम विल कॉल दिस वन एज एन पावर। पावर का एसआई यूनिट क्या होता है, देखो इधर वर्क डन मींस जूल डिवाइडेड बाय टाइम मींस सेकंड। जूल पर सेकंड इज द एसआई यूनिट फॉर पावर, राइट, right what I'm saying, and this joule per second we called as an watt also, watt also we will call। means guys, actually मेरा कहने का मतलब यही था, ये हीट है ना Q is nothing but actually work done by time, work done by time है। I will write this one here, देखो इधर power is equal to work done by time। Actually work done means it is nothing but energy, sorry, power means work done by time, sorry, okay। इधर work done is nothing but energy, energy I'm replacing with Q by T क्या होता है, power होता है, right। T is equal to Q by T, heat by time, energy by time, work done by time। क्लियर है ना, ये पॉइंट मालूम हो गया ना आपको, राइट, इज इट अंडरस्टूड। ओके, इधर एक्चुअली Q है, Q के लिए इक्वेशन क्या होता है, इधर देखो Q इज इक्वल टू पावर इंटू टाइम, पावर इंटू टाइम होता है ना, इसको इधर सब्स्टिट्यूट करो, that one here now is nothing but power into time is equal to mc dt। एक्चुअली हमको टाइम कैलकुलेट करना था, पावर दे चुका पावर 100 and time t is equal to mass 50 ग्राम, इन वैल्यू 4.2 लिख दो, 4.2 इंटू चेंज इन टेम्परेचर कितना होता है, 10 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। क्लियर व्हाट आई एम सेइंग, 10 10 5 is 50, then equal to 5 into 4. Hello guys, actually may I know from which point you are, from which the session will be stopped, actually due to network issue and will be closed, okay। From which point I want to explain again, let me know guys।
quickly. Actually, I solved the problem. I didn't check it. Session end हुआ था. From which point I want to explain this one again? Are you there? Hello? Am I audible, right? Prasanna, Ashwini, Omkar, Namrata, 21 seconds. Okay, did I completed this one, right? Guys, you understood this one, right? Let me know. Is the problem is completely understood to everyone, right? Okay, then it is fine. I thought of it is break in between a problem only. Okay, it's excellent then. Hope you all understood, right? How I calculated this one. Time देता तो power लेके आना. Power देता है उधर. Work done by time. Work done is nothing but guys energy. Okay, energy utilize करो, time मिलता है. Clear? Okay, next thing, our next equation, sorry, topic है heat capacity. Or else we can say this one as an thermal capacity also. क्या next topic? Heat capacity. कितना पढ़ना है? Okay, it's great. Okay, first we'll go through the definition. What is heat capacity? Heat capacity means simple, as I mentioned here, amount of heat required to rise the temperature of whole body by 1 degree centigrade. We're not considering 1 gram or 2 gram or 3 gram. Means not we are going to divide the mass. Whole body का mass का टेम्परेचर क्या करना है 1 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज करने के लिए कितना अमाउंट ऑफ हीट चाहिए उसको हम कहता है हीट कैपेसिटी. मान लो इसके अंदर वाटर है, टोटल मास कितना है यम, आई डोंट नो इवन 1 ग्राम, टोटल मास है ये टोटल. ओके, ये टोटल मास का टेम्परेचर इनिशियली 20 डिग्री सेंटीग्रेड था. नाउ आई विल अप्लाई द हीट. हीट अप्लाई किया, क्या हो रहा है इधर 21 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया, 21 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया. सेम मास to rise this temperature by 20 to 21 degrees centigrade, how much amount of heat you provided, right? That is called the heat capacity. Right? Simple hai. Clear na? Heat capacity. Here heat capacity also we are mentioning with the letter C itself. मान लो ये बड़ा C है, capital C. Capital C is equal to actually it is actually depending upon the mass of the substance and as well as the specific heat capacity of that substance. We call this one as an specific heat capacity. See, last time we done know that one. Clear? Simple सा है. Heat capacity or thermal capacity means we are mentioning with the capacity. It is actually equal to mass into specific heat capacity of that liquid. लिख दो इधर. Mass into specific heat capacity of substance. Clear? Problem क्या है? Water. They are asking what will be the heat capacity. Into specific capacity. 20 ग्राम है. स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है वाटर का. वाटर हीट कैपेसिटी मैंने बोल दिया था 4.2 पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड. से ग्राम मर गया then it will be 4.2 means आता है इधर 84 right.
80 is 84 joule per centigrade. Actually, sorry, from my end there is an internet issue. Okay, try. Okay, within 2 minutes, last 2 to 3 minutes है, कोई problem नहीं. Okay, this is specific heat capacity. Actually, just we have to multiply the mass with specific heat capacity of that substance. That's it, right? And we'll move to the next point, latent heat. Guys, this is very latent heat. Latent heat का मतलब होता है hidden heat. ये क्या है heat? It's a beautiful topic. सुनो, this is क्या है? पहला फिगर है ना? This is ice. Ice क्या होता है? आइस 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है. 0 डिग्री सेंटीग्रेड, राइट? ओके, now we'll give the heat है इसको. When I give the heat to this ice, ice molecule absorbs the heat and start to break the intermolecular bond. What होता है? 0 degree centigrade only, guys. 0 degree only melts and become water. वाटर बन जाता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड में. इंक्रीज होता है. अब तक हम पढ़ते हैं टेम्परेचर इंक्रीज होता है, बट बिफोर इंक्रीजिंग इन टेम्परेचर ओनली, okay, whatever the amount of heat to the substance, no, it will break the bond. के टाइम टेम्परेचर चेंज नहीं है. विदाउट चेंजिंग टेम्परेचर guys, there is no stable internet connection here. The nature is like already it's raining, like that nature is already created. So I don't know whether it will not give a chance to complete the session. Okay, latent heat batana tha. I will tell you tomorrow. Okay, in a tomorrow class I will tell you the latent heat and I will continue the session. Clear enough? Right, let me know in the chat box how was the session, how you feel about the session. Let me know how you feel about the session. Right, yes, ये पोल में बोल दो यार. Okay, I launched the poll, please do participate in poll and we'll see you in a tomorrow class. I don't know something. Thank you Rituja, thank you so much. Okay, good. And meanwhile, if you are having any doubt, means please drop the doubt in the chat box. Okay, and if you have any doubt, means we can wind the session also. There is no problem. Cool. We'll see you in our tomorrow class then. Okay, thank you. Thank you for your participation. Okay, guys, we'll see you in our tomorrow class. Until then, take care. Bye-bye. Bye.